Medical College Hospital and Research Center. So today we will talk about the new NMC Bill, that is the National Medical Council Bill, which is in place of the old MCI, that is Medical Council of India. Now we'll talk about what are the things and amendments that are included under the NMC Bill. Now we'll first talk about the bridge course. Most of you must have heard about the bridge course. So ये bridge course क्या है? We will discuss about it. We will also discuss about the common licentiate exam. See, we all know that most of the people, most of the students about MBBS are having confusion regarding the new licentiate exam in the NMC Bill, which proposes that all the MBBS graduates will have to pass the 4th year final exam as an MCQ exam to prepare and to pass the PG exam. So accordingly, their ranks in the PG will be decided. So we'll talk about this now. Firstly, every year 80,000 of the MBBS graduates take part to license to practice in the country. Now this results in the acute shortage of doctors. So इस acute shortage of doctors को कम करने के लिए the government has proposed this bill NMC, which gives the bridge course. अब इस bridge course के अंदर क्या है? Now we'll talk about that. The bridge course simply proposes that BAMS, BHMS, BIMS and other field of doctors can now prescribe and practice as a licentiate MBBS doctors by doing a 6-month simple course in the areas, in the hospitals. And this is because the rural areas don't have sufficient doctors, and to provide that, now these doctors will now prescribe the modern allopathic medicines and will work as doctors in hospitals. Along with that, I also talk about the common licentiate exam. See, बहुत से लोगों को इसमें confusion हो रही है कि common licentiate exam क्या है और ये कैसे propose हुआ है NMC bill के अंदर, what amendment is there. So this is approved in the cabinet. क्या approve हुआ है? ये हुआ है कि जो मतलब doctors हैं, अब फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, पहले क्या होता था कि फॉरेन कंट्री से डॉक्टर जो आ रहे थे वो इंडिया के अंदर दे हैव टू पास एन एग्जाम टू प्रैक्टिस एज अ लाइसेंसिड डॉक्टर. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इंडियन डॉक्टर्स विल देमसेल्फ हैव टू गिव दिस एग्जाम टू पास दैट. अलोंग विद दिस देयर इज वन मोर अमेंडमेंट. उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि जो पीजी का एग्जाम होता था पहले वो सेपरेट होता था. नाउ देयर इज नो सेपरेट एग्जाम फॉर पीजी प्रिपरेशन. No institute, no dams, nothing, no coaching institute. Now 4th year final exam, मतलब जो students MBBS के 4th year final exam देंगे, firstly that would not be a subjective paper, it would be a MCQ paper, क्योंकि इतने large scale पे इसको handle नहीं किया जा सकता, इसलिए MCQ exam paper होगा. अभी तक ये relevant sources से हमें पता चला है. तो इस basis पे जो लोगों ने MBBS कर भी लिया और जो लोग 4th year में है, इस बेसिस पे 4th ईयर का जो एग्जाम होगा उसकी टोटल ऑल इंडिया रैंक देखी जाएगी स्टूडेंट की, और उस बेसिस पे जो पीजी में एडमिशन्स होंगे वो दिए जाएंगे. तो ये हमारा कॉमन लाइसेंसिएट एग्जाम है. और एक और इसमें बिल प्रपोज किया था कि क्या कॉमन लाइसेंसिएट इंडियन डॉक्टर्स को भी दे के वो प्रैक्टिस करेंगे. तो अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है और इसको शायद कैंसिल भी किया गया है. बट अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो टेल यू कि सिर्फ कैबिनेट ने ये बिल किया है. बहुत से लोगों को डर है कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फट जाएंगे, दिक्कत होगी, इसको कितना टाइम लगेगा. तो मैं बता दूं सिर्फ कैबिनेट में अप्रूव हुआ है, ये पार्लियामेंट में अभी तक एक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है. इसका मतलब दिस बिल हैज़ ओनली बीन अप्रूव्ड एट वन प्लेस, दैट इज द कैबिनेट. इट इज़ नॉट बीन अप्रूव्ड इन द पार्लियामेंट. There are many PIL and there are many doctors who have gone to protest against this bill, and the further establishments is awaited. Everyone, if you have further queries regarding the bridge course and the new NMC bill, you can ask in the comment section or you can personally DM me about the questions. Thank you so much.